Welcome back, dear students. So now today in chapter of limit we have lecture 2 where we will talk about methods to evaluate limits, method number 7. Name is L hospital method. It is also called a shortcut method to solve limit. Here we will see many problems which we have already solved using method number 1, 2, 3. They can be done with the help of L hospital method easily. But this method has some constraint also. It is not applicable to all type of indeterminate form. There are total 7 indeterminate form, but this method is applicable to only 0 by 0 and infinite by infinite. Applicable to only 0 by 0 and infinite by infinite indeterminate forms. Can also be applied to 0 into infinite form if we first convert limit into 0 by 0 or infinite by infinite form. Okay. So L hospital is applicable only and only when we have 0 by 0 or infinite by infinite form. We can also go for one more form, 0 into infinite, but first we will have to convert limit in 0 by 0 or infinite by infinite form. प्रॉब्लम करेंगे तो श्योर बेटर आपको क्लियर होगा. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड what is the method. So according to method, differentiate numerator and denominator, differentiate numerator and denominator separately. Fine. इस पे ध्यान दीजिएगा. I am saying differentiate numerator and denominator separately. No quotient rule of differentiation. We will differentiate numerator and denominator separately. Then put x is equal to a. Repeat the process until indeterminate form ends. Okay. According to method, we will differentiate numerator and denominator separately, and then we will put x equal to a. Process we have to repeat until indeterminate form ends. For example, limit over f of x divided by g of x tending to a is equal to limit over f dash x divided by g dash x is equal to f dash a divided by g dash a. Assuming
First we have indeterminate form, 0 by 0, infinite by infinite. We have differentiated numerator and denominator both. Then putting x equal to a, indeterminate form is no more. I have applied L'Hospital rule one time and I am assuming indeterminate form is no more. But it may be after differentiation one time, indeterminate form is still there. So we will have to go for the process one more time, two more time and so on. Examples करते हैं, then it will be more clear. So I am taking the problem limit over root 2 cos x minus 1 divided by cot x minus 1 x tending to pi by 4. First of all, check indeterminate form. Putting pi by 4, cos pi by 4 1 by root 2, cot pi by 4 1, so clearly 0 by 0 form. We can apply L'Hospital method. Now, as per method, we will do differentiation. Differentiation of numerator and denominator separately. So, differentiation of cos x minus sin x. Differentiation of 1, 0. Differentiation of denominator. Cot का differentiation minus cosec square x. 1 का 0. Clear? So, I have done differentiation of numerator, differentiation of denominator. Once again, I am repeating, there is no quotient rule. Numerator का differentiation अलग, denominator का differentiation अलग. From the formula of differentiation, cos का differentiation minus sin x, cot का differentiation minus cosec square x. Now, we will put value of x. So, root 2 times minus sin pi by 4 minus 0 divided by minus cosec square pi by 4 minus 0. Now, sin pi by 4 1 by root 2, cosec pi by 4 root 2. So, in this way, our answer 1 by 2. Right? So, you can see using L'Hospital, it's so easy to make this problem. Same problem can also be done without L'Hospital. If we go with use of standard limit, problem can be done. But using L'Hospital, process is so easy. Just differentiation of numerator denominator, then putting the value of x, we are able to get answer. One more problem. Limit over log of 2 plus x minus log of 2 minus x whole divided by x. Log has base e where x tending to 0. Check indeterminate form. Clearly 0 by 0. Putting x equal to 0, clearly we have 0 by 0. So yes, L'Hospital can be applied. Now, what to do as per L'Hospital? Differentiation of numerator, so dy by dx of log 2 plus x minus dy by dx of log 2 minus x. In the denominator, dy by dx of x. Now, dy by dx of log 2 plus x, 1 upon 2 plus x. Dy by dx of log 2 minus x,
1 upon 2 minus x, and because of 2 minus x, minus 1 will also come. So student, you must check this step. जिसको भी दिक्कत होगी वो यहाँ पे होगी. Differentiation of log 2 minus x. Log का differentiation 1 upon, then अंदर वाले 2 minus x का minus 1. Now put x equal to 0. So 1 upon 2 plus 0 plus 1 upon 2 minus 0 divided by 1. So 1 by 2 plus 1 by 2. Clearly answer is 1. So once again, using L'Hospital, it's so easy to make the problem. Clear? Same problem can also be done using standard limits, but going through L'Hospital, it's so easy. So students, these are the problems which can be done using L'Hospital as well as without L'Hospital. But ऐसी भी problem संभव है where L'Hospital is must. बिना L'Hospital के problem निकलेगा ही नहीं. For example, limit over root of fx minus 1 divided by root x minus 1, x tending to 1. It is given that f of 1 is 1 and f dash 1 is 2. Okay. We have to make the limit over root of fx minus 1 divided by root x minus 1, where f of 1 is 1 and f dash 1 is 2. First of all, check indeterminate form. Putting x equal to 1, f1 is 1. So 1 minus 1 is 0. So clearly we have 0 by 0 form. So L'Hospital is applicable. Now, using L'Hospital, what we do? Differentiation of numerator divided by differentiation of denominator. Now, differentiation of root of fx. अब आपको यहाँ पे differentiation आना चाहिए. Differentiation of root fx. In the chapter differentiation, class 11, there was formula differentiation of root x. 1 upon 2 root x. So differentiation of root fx. 1 upon 2 times root fx. Then अंदर वाले fx का f dash x. 1 का 0. In the denominator root x का 1 upon 2 root x. 1 का 0. Now put x equal to 1. So f dash 1 divided by 2 times root of f of 1 divided by 1 upon 2 times root 1. At the last, f dash 1 upon root of f1. Given to us, f dash 1 is 2. So final answer is 2. F dash 1 is given 2. So our final answer is 2. f1 is 1 and f dash 1 is 2. So final answer is 2. Right? So this was the problem where standard limit cannot be used. So at present we have one and only one option, that is use of L'Hospital. Okay. Now put the heading use of Leibniz rule. Use of Leibniz rule in L'Hospital.
we are still talking about L'Hospital, but this time L'Hospital having use of Leibniz rule. So now question arises, what is this Leibniz rule? Use of Leibniz rule in L'Hospital. So first of all, we will have to understand what is Leibniz rule. So पहले हम लोग Leibniz rule की बात करते हैं. What is Leibniz rule? dy by dx of integration of f of t dt, where integration has limit, lower limit phi 1x, upper limit phi 2x is equal to dy by dx of upper limit of integration into upper limit inside function of integral minus differentiation of lower limit of integration into lower limit inside function of integral. So dear student, this is our Leibniz rule. It will be a totally new thing for you. Leibniz rule, what we do here? When is it used? It is used to differentiation of what? Integration. कैसा integration? Integration having limit in the variable form. फिजिक्स में सबने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा. इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, बट यूजुअली आपने देखा होगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, 1 से 2 लिमिट कांस्टेंट होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल हैविंग लोअर एंड अपर लिमिट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल. आइदर both are variable or at least one of them is a variable. Integration having lower and upper limit as variable, maybe both of them or at least one of them. Phi 1x, phi 2x means what? Variable. तो ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट में वेरिएबल है, we have to differentiate that. Then what is the formula? Differentiation of upper limit into upper limit inside function of integral minus differentiation of lower limit into lower limit inside function of integral. एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अभी आप इसमें देखो इंटीग्रल के अंदर का वेरिएबल कौन है? t, और लिमिट का वेरिएबल कौन है? x. तो डिफरेंशिएशन अब लिख लो इसको, टू अप्लाई Leibniz rule, differentiation is done with respect to variable present in limit of integration. लिमिट से मेरा मतलब है लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल present in
lower and upper limits of integration should not be inside the integral. Okay. To apply Leibniz rule, this condition must be satisfied. क्या कंडीशन है? Leibniz rule का मीनिंग होगा हम डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इंटीग्रल का. So what I have written? Differentiation is done with respect to variable present in limit of integration. Differentiation is done with respect to variable present in limit of integration. इंटीग्रेशन के लिमिट में जो वेरिएबल होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट में x है, हम dy बाई डी एक्स करेंगे. इंटीग्रेशन की लिमिट में y है, dy बाई डी वाई करेंगे. इंटीग्रेशन की लिमिट में z है, dy बाई डी जेड करेंगे. एंड variable present in limit of integration should not be inside the integral. For example, लिमिट की वेरिएबल, लिमिट में कौन है? x, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन है? t. मान लीजिए कि इंटीग्रल के अंदर x है, तो लेबनीज रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा. व्हाट वेरिएबल प्रेजेंट इन लिमिट, वो इंटीग्रल के अंदर नहीं होना चाहिए. ओनली देन डायरेक्टली लेबनीज रूल इज अप्लीकेबल. नाउ I am taking a problem of limit where application of Leibniz rule will be required. So my problem is limit over integration of sec square t dt divided by x sin x, x tending to 0, and integral has limit 0 to x. 0 to x integration of sec square t divided by x sin x, where x tending to 0. We can make it 0 to x square. Okay. This problem was an exam of AIEEE. AIEEE is the old name of JEE Main. JEE Main के एग्जाम को पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था. So now this is problem of limit. First of all check indeterminate form. How? x की जगह 0 रखेंगे. x की जगह 0 रखोगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. अब x की जगह अगर 0 रखोगे तो व्हाट विल हैपन? इंटीग्रल की लोअर और अपर दोनों 0 हो जाएगी. अब जिनको नहीं क्लियर है वो ये याद रखना, इफ इंटीग्रल हैज बोथ लोअर एंड अपर सेम, इंटीग्रल हैज बोथ लोअर एंड अपर नंबर सेम, इंटीग्रल 0 होता है. पुटिंग x इक्वल टू 0, इंटीग्रल साइन में नीचे ऊपर दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो न्यूमरेटर 0, x की जगह 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0, क्लियरली 0 by 0 form. So yes, L'Hospital is applicable. L'Hospital is applicable. Now, according to L'Hospital method, what we have to do? We will differentiate numerator and denominator separately. So, dy by dx of numerator divided by dy by dx of denominator. Now, when we will go for differentiation of numerator, now here Leibniz rule will come in picture. This differentiation we have to complete. How? Leibniz rule. Differentiation of integral. Differentiation of integral. So here Leibniz rule will come in picture.
Differentiation of integral, how? Leibniz rule. Now what is the Leibniz rule? Differentiation of upper limit, so dy by dx of x square. Differentiation of upper limit, then upper limit inside फंक्शन ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल का फंक्शन कौन है? सेक स्क्वायर टी. तो हम अपर लिमिट कहां रखेंगे? इंटीग्रेशन के अंदर वाले फंक्शन में. अंदर वाले फंक्शन में दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ टी. एक्स स्क्वायर वी विल प्लेस इन प्लेस ऑफ टी. सो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, so dy by dx of 0. Then we will put 0 in place of t divided by differentiation of x sin x. Now how to make this differentiation? Differentiation of x sin x, it is u into v. Differentiation का product rule, u into v. What is that? u into differentiation of v plus differentiation of u into v. So it is differentiation of x square 2x sec square x square minus 0 divided by x cos x plus x का differentiation, differentiation of sin x cos x, differentiation of x, it will be 1. So 1 into sin x. Now इतने पोर्शन को चेक करो. Our original limit was in 0 by 0 form. We have started with L'Hospital. During L'Hospital, differentiation of integral was required. For that purpose, Leibniz rule. So now we have our limit in a new form. What we say? After using L'Hospital, put the value of x. Let's do that here. Now I am going to put value of x which is 0. But student, as soon as you will put 0, you can see again 0 by 0 is coming. X equal to 0. Pura 0, x equal to 0, denominator 0. So here in this problem, after using L'Hospital, still we have indeterminate form. इससे पहले अभी जितने भी प्रॉब्लम करते थे, एक बार L'Hospital यूज करते थे, indeterminate form खत्म हो जाता था. But here in this problem, after using L'Hospital one time, still we have indeterminate form. So now here further we have to do. अभी भी 0 by 0 बना हुआ है, तो क्या करना चाहिए? One more time L'Hospital. One more time L'Hospital. Yes, but रुक जाओ. In L'Hospital, what we do? We do the differentiation. Originally, differentiation was easy, so we have gone for the L'Hospital. तब आपको ये सोचना होगा क्या L'Hospital के लिए जाना हर बार फायदेमंद होता है? Tell me, here if I go for L'Hospital, I will have to do the differentiation. Differentiation of numerator, differentiation of denominator. That is not so tough, can be done, but टाइम लगेगा. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, u इंटू वी आएगा, इट विल टेक टाइम. तो फर्दर आई एम नॉट गोइंग फॉर L'Hospital. नाउ आई विल लाइक टू कंप्लीट द प्रॉब्लम यूजिंग ए स्टैंडर्ड लिमिट. एक बार आपने L'Hospital लगा दिया, उसके बाद दोबारा थर्ड टाइम फोर्थ टाइम क्या L'Hospital लगाना चाहिए, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है. अपना पर्पस है लिमिट को सॉल्व करना. एक बार L'Hospital लगा दिया, स्टिल इनडिटरमिनेट फॉर्म इज देयर. नाउ इट इज माय चॉइस कि मैं फर्दर L'Hospital लगाऊं या किसी और मेथड से लिमिट सॉल्व कर लूं. फॉर एग्जांपल हियर इन प्लेस ऑफ यूजिंग L'Hospital आई विल लाइक टू डिवाइड बाई x. ऊपर नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया. I am dividing numerator and denominator both by x. I have divided numerator and denominator both by x. मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया. Now
It is sin theta by theta, standard limit 1, cos 0, this will be sec 0. So clearly my limit is getting solved without using L'Hospital one more time. Sec 0 is 1, so 2 into 1 divided by cos 0 1. So the final answer I am getting, it is 1. Clear? I have started with L'Hospital, Leibniz rule, then indeterminate form is still there. One more time L'Hospital was required, but in place of using L'Hospital, I have gone through standard limit. After dividing by x, clearly we have a standard limit. Following that, final answer is 1. Okay? So now students, we have just completed method number 7 of solving limit, which is L'Hospital method. So total 1 to 7 methods we have done for solving of limits. But have you seen an important thing कि जितने भी methods हम लोगों ने किए, they all are dealing with limits having indeterminate form, 0 by 0, infinite by infinite, 0 into infinite, infinity minus infinity. There are total 7 indeterminate forms, but method we have seen till now are dealing with only first 4 method, 0 by 0, infinite by infinite, 0 into infinite, infinite minus infinite. 3 more indeterminate form, 1 की power infinity, 0 to the power 0, infinite to the power 0. Till now, no method is able to deal with those indeterminate forms. So now there is a need to study how to solve the limit whenever these indeterminate forms are present. So I am going to put the heading limits having form 1 raised to the power infinite. Our last method, L'Hospital, is able to deal only with 0 by 0, infinite by infinite, 0 into infinite. There is no method which can deal with 1 to the power infinite. So such kind of limit we will study separately. So limits having form 1 to the power infinity. Limit over f of x raised to the power gx, x tending to a. Where f of a is going towards 1 and g of a going towards infinity. Okay? ये 1 जा रहा होगा, ये इन्फिनिटी जा रहा होगा, तभी तो 1 to the power infinity मिल रहा होगा. तो लिमिट्स हैविंग फॉर्म 1 to the power infinity, ऐसी लिमिट देखने में कैसी होगी? हैविंग सम बेस एंड सम पावर. कुछ बेस होगा, कुछ पावर होगा, तभी तो 1 to the power infinite फॉर्म आ पाएगा. So to solve this limit, we say use formula. What is the formula? Limit over f of x raised to the power g of x is equal to e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. Right? Whenever we have limit in form 1 raised to the power infinite, we will apply the formula. What formula? Limit is equal to
e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. What is g of x? Power. What is f of x? Base. We will apply the formula limit is equal to e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. How is it coming? अगर ये आपको जानना है, so let y is equal to limit over f of x raised to the power g of x, where f of a tending towards 1, g of a tending towards infinity. Now I am taking log on both sides. So log of y is equal to limit over log of f of x raised to the power g of x. It can be written limit over g of x into log of f of x. Is that clear? Using the property of log, limit over g of x into log of fx. Now I am writing it limit over g of x into log of 1 plus f of x minus 1. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने क्यों प्लस 1 माइनस 1 किया. सो माई इंटेंशन इज वेरी क्लियर. आई एम मूविंग टूवर्ड स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ लॉग. देयर वॉज a standard limit of log, that is log of 1 plus x divided by x, log of 1 plus x divided by x, x tending to 0 is equal to 1. Limit of log of 1 plus x divided by x is equal to 1. So what is the demand of this limit? कि log inside the log there must be 1 plus, और 1 के साथ जो प्लस में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए एंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए. वी मस्ट हैव log of 1 plus and what is in plus should be in denominator also and tending towards 0. मेरे पास क्या था? log of fx था. To make this standard limit, knowingly मैंने लिख लिया 1 plus fx minus 1. fx टेंडिंग टू 1 है, मतलब x हमारा a है, x हमारा a है तो ये fa हुआ. fa टेंडिंग टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. सो नाउ स्टैंडर्ड लिमिट की जो रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट वी हैव इन एडिशन विद 1 शुड बी इन डिनोमिनेटर. 1 के साथ एडिशन में क्या है? fx minus 1. तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? fx minus 1. अब हम कुछ डिनोमिनेटर में लेके आए हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें ऊपर भी करना होगा. तो यहां भी मैंने लिखा fx minus 1. फाइन. नाउ this portion will go for standard limit. This portion will go for standard limit. Which standard limit? Log of 1 plus x divided by x. So I have log of 1 plus fx minus 1 divided by fx minus 1. So it will be how much? It will be 1. In the remaining portion, I am putting x equal to a. So g of a, yeah, I am not applying the limit right now, not putting the value of x, just it is limit over g of x into fx minus 1.
On the left hand side, I have log of y. Clear? Now using the property of log, y will become e raised to the power limit. So we will get finally this result. अब जब यहाँ से आप log को हटाओगे तो क्या आएगा? y is equal to e raised to the power limit over. तो we will get this result. Is it? So there is no need to remember this proof. Just for your knowledge मैंने आपको ये बता दिया. You have to directly apply this formula always whenever you are finding limit having the form 1 to the power infinity. प्रॉब्लम में आपने देखा 1 to the power infinity का फॉर्म है. Just write your limit is equal to e raised to the power limit over gx into fx minus 1. कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं. A simple problem. Limit over 1 plus 5x raised to the power 2 by x, x tending to 0. First of all, check the form. Putting x equal to 0, it is 1. Putting x equal to 0, it is infinite. So I have clearly 1 to the power infinite form. Now, formula e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. What is here g of x? G of x is clearly 2 by x. What is here f of x? 1 plus 5x. So now e raised to the power limit over 2 by x into 5x. Finally, e raised to the power limit over 10. Since there is no term of x, so limit over 10 is equivalent to 10. So that is our final answer, e raised to the power 10. Our final answer, e raised to the power 10. Next, limit over tan of pi by 4 plus x whole to the power 1 by x, x tending to 0. Just check the form. We will put x equal to 0. Putting x equal to 0, tan pi by 4, which is 1. Putting x equal to 0, 1 upon 0, infinite. So what is the form? Clearly 1 raised to the power infinity. We have form 1 raised to the power infinity. Now the formula e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. What is g of x? It is 1 by x. What is f of x? Tan pi by 4 plus x. Now, in this portion, I will apply the formula tan a plus b. What is the formula of tan a plus b? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. So it is e raised to the power limit over 1 by x into 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. We know that tan pi by 4 is how much? 1. Tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1. So now e raised to the power limit over 1 by x into 1 plus tan x minus 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. We can cancel 1 with 1. So now e raised to the power limit over 2 tan x divided by x into
1 minus 10x. Now, using the formula when limit has 1 to the power infinite form, हम लोग यहां तक आ गए. अब here final answer will come only after solving this limit. और अभी अगर आप चेक करो x की जगह 0 रखने पे tan 0 0, it is clearly 0 by 0 form. Now we have to complete this limit which is 0 by 0 form. So do we have use of standard limit here? आप इसको देखो, डिनोमिनेटर का x, न्यूमरेटर का tan of x from numerator and x from denominator, tan of x from numerator, x from denominator, what will they make? They will make tan theta by theta, और tan theta by theta क्या होता है? 1. So I am going to write e raised to the power 2 into 1 divided by 1 minus tan 0. मेरे इस वर्किंग को देखिएगा, tan थीटा बाई थीटा 1 चला गया, रिमेनिंग पार्ट में मैंने x को 0 रख दिया. नाउ tan 0 कितना होता है? 0. सो e raised to the power 2 is our final answer. tan 0 is 0. So final answer is what? Final answer is e raised to the power 2. So students, we are solving the limits having indeterminate form 1 to the power infinite. Now the next problem I am writing here, limit over 1 raised to the power 1 by x, 2 raised to the power 1 by x, 3 raised to the power 1 by x up to n raised to the power 1 by x divided by n whole to the power x. सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं. x is infinity, तो 1 upon infinity, 2 upon infinity, 1 upon infinity, 1 upon infinity, 1 upon infinity. तो what about all these power? ये सारी की सारी पावर जीरो हो जाएंगी. समझना फॉर्म को. बिकॉज ऑफ x infinity all power will be zero, और पावर जीरो होने पे all the figure will be 1. ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो 1 1 1 1 1 n टाइम, and denominator is n, n upon n will make 1, and because of x infinity power is already infinity, so clearly we have 1 to the power infinity form. Here in this problem clearly we have 1 to the power infinity form. So formula, e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. Now we will apply the formula e raised to the power limit over g of x into f of x minus 1. a की जगह क्या है? इन्फिनिटी. g of x किसे कहते हैं? पावर को. f of x किसे कहते हैं? टर्म इनसाइड द ब्रैकेट या बेस. सो e raised to the power limit over x into 1 raised to the power 1 by x, 2 raised to the power 1 by x, 3 raised to the power 1 by x up to n raised to the power 1 by x divided by n minus 1. Now we will solve it. So e raised to the power limit over 1 raised to the power 1 by x, 2 raised to the power 1 by x up to n raised to the power 1 by x minus n whole divided by n. Clear? So now student, here in this problem 1 to the power infinite का रोल होने पे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. बट यू कैन सी लिमिट इज नॉट सॉल्व्ड राइट नाउ. अभी तक की प्रॉब्लम में क्या था कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट होने पे फॉर्मूला अप्लाई करते थे, लिमिट सॉल्व होकर आंसर आ जाता था. बट सेम सिचुएशन इज नॉट हियर. बिकॉज ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, बट नाउ limit is still there.
ये लिमिट अब हमें सॉल्व करनी होगी, ओनली देन वी विल रीच फॉर अवर आंसर दिस लिमिट. e raised to the power has some limit and we will have to make this limit, only then we will have our answer. अभी अगर मैं बात करूं आंसर की, सो वी हैव, अभी अगर मैं आंसर की बात करूं या इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करूं तो x इंफिनिटी है, बिकॉज ऑफ x इंफिनिटी ये सारे पावर वाले टर्म 1 हो गए तो उन्होंने n बना लिया, n माइनस n 0 हो गया और बाहर वाला है x इंफिनिटी. सो अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो राइट नाउ लिमिट हैज क्लियरली 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म. ये जो मैंने 0 इंटू इनफाइनाइट लिखा, इट इज form of this limit. This limit has indeterminate form 0 into infinite. So anyhow we have to make this limit. ये limit बन जाएगा. So now we can see limit has the form 0 into infinite and we have to solve this limit. Once this limit is solved, final answer will come. So I am writing e raised to the power limit over x को मैं नीचे ले जाऊंगा. राइट नाउ आई एम राइटिंग 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई 2 टू द पावर 1 टू द पावर 1 बाई एक्स 2 टू द पावर 1 बाई एक्स अप टू n इज टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस, इस n को मैं स्प्लिट कर रहा हूं और मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला ये जो x था ये नीचे आके 1 बाई एक्स हो गया. सो नाउ e raised to the power limit over, नाउ 1 मैं उठा के यहाँ अटैच कर रहा हूँ इन टर्म्स के साथ. सो 1 raised to the power 1 by x minus 1 plus 2 raised to the power 1 by x minus 1, and in this way n raised to the power 1 by x minus 1 divided by n times 1 by x. Clear? इतना आप समझिए. Now student, I am going to use limit a raised to the power x minus 1 divided by x, x tending to 0. याद करो क्या होता था, it is log a. Now I am going to use this limit here. I am going to use this limit here. So first of all, you will have to understand how this limit work. As per this limit, what is in power, same should be in denominator and must be moving towards 0. What is in power, same should be in denominator and must be moving towards 0. Let's check. What is in power, same is in denominator. ये जो 1 by x आपको दिख रहा है ये हर ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा. तो व्हाट इज इन पावर, सेम इज इन डिनोमिनेटर. नाउ x इंफिनिटी है तो 1 अपॉन x क्या होगा, 0 होगा. सो मे आई से रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लिमिट यहां पे फुलफिल हो रही है. इस लिमिट की रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट इज इन पावर, सेम शुड बी इन डिनोमिनेटर एंड मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स 0. तो पावर इज 1 बाई एक्स, डिनोमिनेटर इज 1 बाई एक्स, तो सेम सेम हो गया. x इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 0 होगा. इस बात को समझना. आप में से कुछ को लगता है कि x टेंडिंग टू 0 होता है, यहां तो इंफिनिटी है. माय डियर, पावर और डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है. पावर इज व्हाट, 1 बाई एक्स, x अगर इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स क्या होगा, 0. तो 100% दिस लिमिट कैन बी followed here. So now e raised to the power limit over 1 raised to the power 1 by x minus 1 divided by 1 by x plus 2 raised to the power 1 by x minus 1 divided by 1 by x. In this way
n raised to the power 1 by x minus 1 divided by 1 by x, and this complete one divided by n. ये जो n है n हमारा रह जाएगा. So now e raised to the power. Now I'm going to apply the limit. This term, this term, this term. It will make log a. Log a means log 1, log 2, log 3 up to log n. So I'm going to get e raised to the power log 1 plus log 2 plus log 3, and in this way log of n divided by n. Getting it? Now using the property of log, they will make log over 1 into 2 into 3 up to n divided by n. I will write, और ये log की पावर log बेस ही चल रहा है, log of factorial n divided by n. Clear? I can write it as e raised to the power log over factorial n raised to the power 1 by n. इसको समझिएगा, आप में से कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे. लॉग की प्रॉपर्टी से पावर 1 by n बाहर आ जाती, तभी मेरे पास बाहर क्या 1 by n, यूजिंग द प्रॉपर्टी में अंदर ले गया तो फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. नाउ लॉग की प्रॉपर्टी होती है e टू द पावर लॉग हैविंग बेस e, लॉग हट जाएगा, फाइनली फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. सो आवर फाइनल आंसर फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. समझिए इस प्रॉब्लम को, फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n, दैट इज अवर आंसर. फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. चेक करिए कैलकुलेशन. डाउट है किसी को मेरे से पूछिए. वी आर गेटिंग द आंसर फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. अपॉन में n था, ये लॉग ऑफ फैक्टोरियल n हो गया, देन n अंदर चला गया. सो व्हाट्स द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल n रेज टू द पावर 1 by n. Right? So student, in this way we have done limits having the form 1 to the power infinity. But कुछ और भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, याद करिए कौन से? 0 to the power 0, infinite to the power 0. So we must be known how to solve limit having those form. So now I am taking limits having form 0 to the power 0, infinite to the power 0. In this chapter of limit, first we have found method 1 to method 7, dealing with mainly 4 indeterminate form, 0 by 0, infinite by infinite, infinite minus infinite, 0 into infinite. Then we have done limits having the form 1 to the power infinity. Now I am going to check limits having form 0 to the power 0, infinite to the power 0. If these forms are present, then what should be the our working? Clear? So here I will advise you to follow some steps. Step number 1, take limit is equal to y. Step number 2, apply log on both sides. Step number 3, solve limit using L'Hospital. क्लियर? चलिए प्रॉब्लम को करते हैं. लिमिट ओवर
sine of x raised to the power x, x tending to 0. This limit we have to make limit over sine of x raised to the power x, x tending to 0. अब आप में से कई स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को करना भी स्टार्ट कर दिया होगा कि पुटिंग 0 0 टू द पावर 0, फॉलोइंग दीज स्टेप्स आपने इसको करना भी चालू कर दिया होगा. रुक जाइए, आप गलत कर रहे हैं. इफ दिस प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट. जल्दबाजी मत करो, पहले इसको समझो. वाई? x स्टैंडिंग टू 0 के दो मतलब होंगे, 0 प्लस 0 माइनस. नाउ नेगेटिव रेज टू द पावर वेरिएबल रट लीजिएगा, मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इज नॉट डिफाइंड. नेगेटिव रेज टू द पावर वेरिएबल, हियर इन दिस प्रॉब्लम x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव. टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होगा? x 0 प्लस 0 माइनस. इन केस ऑफ 0 माइनस, base will be negative, power is variable, and negative raised to the power variable is never defined. So if problem is given in this manner, you will write the answer does not exist. Now I am going to make some changes in the problem, and that is x tending to 0 plus. If my problem is this one, limit over sine of x raised to the power x, x tending to 0 plus. Now 100% this limit is existing, and we will solve to get our answer. So now you should follow the procedure. Let y is equal to limit over sine of x raised to the power x, x tending to 0 plus log on both sides. So log of y is equal to limit over log of sine of x raised to the power x. Now we will apply property of log, so power will come in multiplication. So it is limit over x into log of sine x, and here I have log of y. Fine. We have to get the value of y. Y तभी निकलेगा when this limit on right hand side, this limit on right hand side is solving. अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट बनेगी तभी आंसर आएगा. इस लिमिट का फॉर्म चेक करो. पुटिंग x 0, ये 0, पुटिंग x 0, साइन 0 प्लस 0 के नेबरहुड में लॉग किधर जाता है? जब आप x को 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? log 0. अब आप में से कुछ को लगेगा log 0 तो होता ही नहीं है. यस, log 0 नहीं होता है, बट वी हैव टेंडिंग टू 0 प्लस, तो दिस विल बी अ नंबर मोर देन 0. तो वी आर टेकिंग log ओवर 0 प्लस, and that is minus infinity. So this limit has formed 0 into infinite. On the right hand side we have a limit, and this limit has formed 0 into infinite. So now our purpose is to solve this limit. So what I am going to do, I am going to write limit as log of sin x divided by 1 by x. Why? मैंने आपको स्टेप में लिखवाया था क्या? वी फॉलो एल हॉस्पिटल. एल हॉस्पिटल कब लगता है? जब 0 by 0 हो, इनफाइनाइट by इनफाइनाइट हो. लिमिट इज इन द फॉर्म 0 into इनफाइनाइट, एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा. अब यहीं पे ध्यान देना, ड्यूरिंग एल हॉस्पिटल मेथड मैंने आपको क्या बताया था? We can apply L hospital also in case of 0 into infinite, but first we will have to convert limit in the form 0 by 0, infinite by infinite. Same I am doing here. Into वाले x को मैं नीचे ले गया, 1 by x हो गया. Benefit for x tending to 0, log 0 infinity, 1 upon 0 infinity.
Are you getting me? It has 0 into infinite form, but because of this step, clearly infinite by infinite. So now here L hospital will come in picture. What we do according to L hospital? Differentiation. किसका differentiation? Numerator का, denominator का. Let's do log of sin x. I'm writing differentiation of log of sin x and differentiation of 1 by x. Here we have log of y. Do it. So now log of y is equal to limit over, right? dy by dx of log sin x will be what? 1 upon sin x into cos x. पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे log का, so 1 upon sin x. Then you will differentiate sin x, that's the reason cos x. Differentiation of 1 by x minus 1 upon x square. So it is limit over x square ऊपर चला गया तो minus टाइम x square into cot x. I can write limit over minus टाइम minus x into x upon 10x. चेक करिए, आर यू गेटिंग इट? कॉट को मैं नीचे ले गया तो कॉट जाके 10 हो गया और x स्क्वायर को मैंने x इंटू एक्स कर लिया. नाउ इज इट स्टैंडर्ड लिमिट? थीटा बाई टेन थीटा, x स्टैंडिंग टू 0, थीटा बाई टेन थीटा, टेन थीटा बाई थीटा 1, थीटा बाई टेन थीटा ऑल्सो 1 and it will be 0. So minus time 0 into 1, finally I am getting 0. और ये 0 मैंने किसकी वैल्यू है? 0 is the value of log of y. 0 is the value of log of y. So I am getting log of y equal to 0. In this manner, what about y? y equal to 1. और याद करिए y हम लोगों ने किसको लिया था? We have taken y is equal to limit. तो हमें y की वैल्यू 1 आ गई, that means limit की वैल्यू 1 आ गई. One more problem I am taking, and this problem was in exam of IIT. It is limit over 1 upon x raised to the power sin x plus sin of x raised to the power 1 by x, x tending to 0 plus x tending to 0 plus 1 by x raised to the power sin x plus sin of x raised to the power 1 by x, where x tending to 0 plus. Clear? Now लिमिट का प्रॉब्लम आपके सामने आया. सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म देखा जाता है, whether limit has indeterminate form or not. हम जो लिमिट को सॉल्व करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं, उसकी नीड कब पड़ती है? When limit has indeterminate form. अगर लिमिट में indeterminate form है ही नहीं तो why we will go for the process? We will directly put value of x. So here in this problem, let's check. Putting x 0, first term is what? First term is infinite to the power 0. And what is the second term? Second term is 0 raised to the power infinite. Clear है? x को 0 रखने पे first term infinite to the power 0 and second term 0 to the power infinite. अब क्वेश्चन उठता है, are both of them indeterminate form? बोलो. indeterminate form क्या थे? 0 by 0, infinite by infinite, 0 into infinite, infinite minus infinite, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, infinite to the power 0. ये indeterminate form होता है. But what about this? Is it listed in indeterminate form? No. ये indeterminate form नहीं होता है. It is indeterminate
मिनेंट फॉर्म नहीं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, इट इज क्लियरली जीरो. 0 to the power infinite is not indeterminate form, it is 0. So in this manner our problem is simply limit over 1 upon x raised to the power sin x. बोलो आया समझ. Our problem is limit over 1 upon x raised to the power sin x. Student, this problem was in exam of IIT, and reason behind this problem you can see कि स्टूडेंट एग्जाम में देख के चकरा गया है कि इसको कैसे किया जाए, कि ये दो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हम सिंगल इनडिटरमिनेट होता है तो उसको y लेके कर लेते हैं. सो क्लियरली इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टर्म इज एन indeterminate form but the second term has no indeterminate form. Second term is clearly 0. So in the name of limit we have to solve only and only limit over 1 by x raised to the power sin x. Now putting x 0, it is infinite to the power 0. Now we know the method. Let y is equal to limit, then log on both sides. So log of y is equal to limit over log of 1 by x raised to the power sin x. Now we will use property of log. So log of y is equal to limit over sin of x into log of 1 by x. So log of y is equal to limit over sin of x. Now इसके बारे में बताइए, log of 1 by x को क्या लिखेंगे? May I write minus log x? So now log of y is equal to minus time limit over sin of x into log x. Now the whole story will depend upon solution of this limit. ये लिमिट अगर बन गई तो आंसर निकल आएगा. So we have log of y is equal to minus time limit over sin of x into log of x. चेक करिए जरा, ये लिमिट का फॉर्म क्या है? x को 0 रखोगे sin 0 0, log 0 infinite. On the right hand side we have limit, and limit has form 0 into infinite. Can we apply L'Hospital? No. But if I write this limit as limit over log of x divided by cosec x, now it is clearly infinite by infinite form. Putting 0 log 0 infinite, cosec 0 infinite. So I can go for L'Hospital method. What is L'Hospital method? Differentiation in numerator as well as denominator. What is that? Log x का differentiation 1 upon x. Differentiation of cosec x क्या होता है? Minus cosec x into cot x. Now माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोसेक कॉट ऊपर आ जाएगा, तो लिमिट ओवर साइन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ वाई. इट इज अ स्टैंडर्ड लिमिट. साइन थीटा बाई थीटा 1, साइन थीटा बाई थीटा 1 and putting 0, tan 0 0. So I am getting
log of y is equal to 1 into 0 is equal to 0. Since I have log y equal to 0, what to say about y? Clearly y is 1. And y was our limit. We have taken limit is equal to y. At the last we have got y is equal to 1. So this is our final answer for given limit. For given limit, our answer is y is equal to 1. Clear? So this was the problem where initially we have infinite to the power 0 plus 0 to the power infinite. Only infinite to the power 0 indeterminate, 0 to the power infinity is 0. Using that, problem is converted into limit over 1 by x raised to the power sin x. Indeterminate for infinite to the power 0. We know the method how to make such kind of limits. Clear? So with this students, I have completed this chapter limit. Now you will have to solve the problems given. Exercise आपको करनी है. You will have so many doubts. We will discuss that. And our next chapter, continuity and differentiability. There we will have to use limit a lot. Clear? So with this, I am completing this chapter. Thank you. So students, till now we have covered all possible indeterminate forms of a limit. Now I am going to write a problem where we have to find value of some unknown. We do not have to find the value of limit. We have to find the value of unknown given and try to understand this problem carefully. It's a very good problem. IIT के एग्जाम में पूछा हुआ problem है. And here you will see forcefully we are making indeterminate form to solve limit. Problem is if limit over a minus root over a square minus x square minus x square by 4 whole divided by x raised to the power 4 where x tending to 0 is finite find the value of a. Okay, so limit given to us is what? Limit over a minus root over a square minus x square by 4 whole divided by x to the power 4. We have to find value of a. Okay? Now, in a problem of limit, first of all, what we check? We check the indeterminate form. Let's check. Putting x equal to 0. Root a square a minus a 0, x 0, 0. It is clearly 0 by 0. Any doubt? Putting x equal to 0, limit has clearly 0 by 0 form. So without any hesitation, we can apply L'Hospital method. Is it? According to L'Hospital method, what to do? Differentiation. Differentiation of numerator. So dy by dx of a minus root over a square minus x square minus differentiation of x square by 4. In denominator, differentiation of x raised to the power 4. So now it is limit over, पहले मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूँ 4x क्यूब. Now come to the numerator. Differentiation of a is a constant 0. Differentiation of root 1 upon 2 times root over a square minus x square. रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन 0 minus 2x minus
Differentiation of x square by 4 will be how much? 2x by 4. So now it is लिमिट ओवर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 2 इन द डिनोमिनेटर 4x क्यूब. चेक करिए, लिमिट ओवर x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस x बाई 4 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब. इज इट? Now, putting x equal to 0? No. अभी हम लोग x को 0 ना रखें, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पहले उसको कैंसिल कर लेते हैं. x is common from the numerator, तो डिनोमिनेटर से x कैंसिल कर देगा, तो इट इज 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा. अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा. नाउ इट इज अवर लिमिट, फाइन. कोई भी लिमिट हमारे सामने आती है, व्हाट वी डू, हम x की वैल्यू रखते हैं. व्हाट इज x? x इज 0, पुट इट हियर. सो व्हाट विल कम? 1 अपॉन a माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 0. am I right? In a problem of limit we put the value of x, so here we will put x equal to 0. Putting x equal to 0, what will happen? 1 upon a minus 1 by 2 by 0. Now tell me, 1 upon a minus 1 by 2 by 0 कितना होगा? Infinite होगा. 1 upon a minus 1 by 2 upon 0 will be infinite. If I put the value of x 0 here, I will get infinity. Problem में शुरू में ही बोला गया था, limit is what? Limit is finite. But putting the value of x I am getting infinity. And अब आप कहोगे कि आप लिमिट को आगे सॉल्व करो. मैं बोलूंगा कि मैं क्यों सॉल्व करूं. किसी भी लिमिट को हम सॉल्व कब करते हैं? When there is indeterminate form. Do infinity is indeterminate? आंसर है नहीं. infinity indeterminate नहीं होता है. Putting x equal to 0, I am getting infinity, which I must accept. Putting x equal to 0, I am getting infinity, which I must accept. Putting x equal to 0, I am getting infinity, which I must accept. Why? Because infinity is determinant. But problem is saying कि आप लिमिट का आंसर infinity नहीं ले सकते, क्योंकि लिमिट इज फाइनाइट. तो डियर स्टूडेंट, हियर वी विल हैव टू सॉल्व दिस लिमिट फर्दर. लेकिन हम लिमिट को फर्दर तभी सॉल्व करते हैं जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो. सो जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वो समझिएगा. सिंस लिमिट इज गिवन finite, so this limit must be solved further, for which indeterminate form is must it implies that a is equal to 2. बोलिए. लिमिट को आगे जाना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे रोक देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट हमें लेना नहीं है. अब ये लिमिट आगे तभी जाएगी जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो. इनडिटरमिनेंट फॉर्म होने के लिए a 2 होगा. a अगर 2 हो जाए तो 0 by 0 इनडिटरमिनेंट कहलाएगा. सो देयर मस्ट बी a equal to 2. इसे कहते हैं फोर्सफुली इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाना. प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है लिमिट आगे बढ़े. लिमिट आगे तभी बढ़ेगी जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो.
फॉर दैट पर्पज ए मस्ट बी 2। प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना था, ए निकालना था, ए निकाल लिया, बट मैं प्रॉब्लम में और भी कुछ ऐड कर रहा हूं, फाइंड ए एंड वैल्यू ऑफ लिमिट। हम लोग इस प्रॉब्लम में लिमिट की वैल्यू भी निकालेंगे। वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट ऑल्सो। ए तो निकल आया, बट आगे सॉल्व करके लिमिट की वैल्यू भी निकालेंगे। वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज वैल्यू ऑफ लिमिट। अभी ए निकला है, तो अब जो ए निकला है इसको मैं वापस लिमिट में पुट कर रहा हूं। Now I am putting back value of a in the limit. So now limit over 1 upon root over 4 minus x square minus 1 by 2 divided by 4x square. Now you can check it is 0 by 0. Apply L'Hospital. So limit over differentiation of 4 minus x square raised to the power minus half minus differentiation of 1 by 2 whole divided by differentiation of 4x square. So it is limit over after differentiation minus 1 by 2 4 minus x square minus 1 by 2 minus 1 अंदर का differentiation minus 2x 1 by 2 का 0 in the denominator differentiation of x square, that will be 2x, so it will make 8x. So now it is limit over minus minus plus 2 cancel x into 4 minus x square raised to the power minus 3 by 2 divided by 8x. X cancel. Now put x equal to 0. So putting x equal to 0, it will be 4 raised to the power minus 3 by 2 divided by 8. 4 को लिख लेना क्या, 2 to the power 2, 2 की power minus 1 by 8. Final answer is 1 by 64. This is my answer. So student, it's a very very good problem. इसको 2 से 3 बार अटेम्प्ट करो कि प्रॉब्लम में बीच रास्ते में जाके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो गया था, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट थी लिमिट आगे बढ़े, उसके लिए जबरदस्ती हम लोगों ने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाया. सो वी आर एबल टू गेट वैल्यू ऑफ ए. सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड फोर्स्ड प्रॉब्लम, जहां पे हम फोर्सफुली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं सो दैट प्रॉब्लम कैन बी कंटिन्यूड फर्दर. और प्रॉब्लम को फर्दर कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई? क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए. इस स्टेप पे आके आंसर इन्फिनिटी आ रहा था एंड इन्फिनिटी वॉज नॉट अलाउड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम भी आती है. यू कैन पुट द हेडिंग लिमिट ऑफ समेशन. Limit over 1 by n into summation of f of r by n. R is going from R1 to R2 where n tending towards infinity is equal to a to b integration f of x, where r by n is equal to x. R by n is replaced by x. Limit over r1 by n is equal to a, n tending to infinity, and limit over r2 by n is equal to b, n tending to infinite. Right? So in the examination, if you find a problem where limit is taken over summation sign, you must recall this formula. Limit over summation sign. There are some requirement.
there must be 1 by n outside the summation. Inside the summation, f of r by n, it means formula. Summation के अंदर we should have formula in terms of r by n. Summation के बाहर 1 by n, summation के अंदर formula in terms of r by n. If these requirements are fulfilled, then limit can be written as an integral. A to b integration of f of x, where r by n is replaced by x, a has value limit over r1 by n, and b has value limit over r2 by n. I am taking a problem, limit over summation r upon root over r square plus n square 1 by n tending to infinite, where r is going from 1 to 2n. Clear? Limit over 1 by n into summation of r upon root over r square plus n square. So we can see our requirements are 50% fulfilled. Limit over summation, summation के बाहर 1 by n होना चाहिए, that we have. But inside the summation, formula in terms of r by n. That has meaning कि summation के अंदर जो आप देख रहे हैं वो r upon n के टर्म में होना चाहिए. Right now r and n both are separated. We will like to see them in terms of r by n. So keeping that in mind, what I am doing, I am taking n square common from the square root. मैंने n स्क्वायर को रूट के बाहर निकाला, n आया, ऊपर वाले r के साथ मिलके r by n हो गया. बताइए, ऐसा समझना. So now we have expression inside the summation in terms of r by n. हमारी रिक्वायरमेंट होती है f r by n. That has meaning समेशन के अंदर जो लिखा है वो r by n के टर्म में होना चाहिए. So it will be replaced by integral a to b x upon root over x square plus 1. Is it? हमारी जो लिमिट थी वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई. इन विच इंटीग्रल? a to b integration of x upon root over x square plus 1. What about a? A is limit over r1 by n. How much r1? R1 is 1, so limit over 1 by n, it is 0. What about b? Limit over r2 by n. What is r2? R2 is 2n, so limit over 2n by n, it is 2. So now, problem is, zero to 2 integration of x upon root over x square plus 1. So student, अब यहाँ पे पूरा खेल है इंटीग्रेशन का. मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं, बट आज से आप पढ़ेंगे लगभग 1.5 मंथ बाद. फिजिक्स में आई होप आपने इंटीग्रेशन के बारे में ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. सो इफ यू आर नॉट एबल टू वर्किंग फ्रॉम हियर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जो वर्किंग अब मैं करने जा रहा हूं ये आप मैथमेटिक्स में आफ्टर 1.5 मंथ पढ़ेंगे. फाइन, पैनिक मत होइएगा. व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट आप उसको अभी रट सकते हो. सो आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, देन 2x plus 0 is equal to dt by dx. In this way, dx has value dt upon 2x. Now, I am going back to the integral. So 1 by 2 dt upon root over t. Limit 0 रखोगे तो 1 और 2 को रखोगे तो 5.
Fine. Now this integral we have to make 1 by 2 times 1 to 5 integration of t raised to the power minus half. So it will come 1 by 2. अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप में से जिसको भी नहीं पता मत पैनिक होइएगा, रट लीजिएगा व्हाट आई एम डूइंग. आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा. तो आफ्टर इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1, and we will apply the limit 1 to 5. Now it is 1 by 2 times t to the power half divided by 1 by 2 limit 1 to 2. ये half t की पावर हाफ अंदर 1 by 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो नाउ t raised to the power half where we have to apply limit 1 to 5. Final answer root 5 minus root 1. It is root 5 minus 1. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट किया है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा. In future you will study a chapter integration where you will clearly know how this result is coming. अभी आप इस कैलकुलेशन को रट सकते हो. So the final answer we are getting root 5 minus 1. Okay? So मैंने आपको एक रिजल्ट बताया which is limit of summation. So whenever limit is given over summation sign, you must recall this formula where given limit is converted into integral sign. Clear? Now students, we have last portion of our chapter limit. It is sandwich theorem. Fine. Sometimes there are problems from this topic, otherwise it is not too much in use. सैंडविच थ्योरम नाम से ही क्लियर है. सैंडविच कि आपने ब्रेड का सैंडविच देखा. सैंडविच कब होता है? वी हैव 2 पीसेस ऑफ ब्रेड और उसके बीच में कुछ स्टफ होता है, तो हम बोलते हैं कि इट इज सैंडविच. सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हियर. आई हैव 2 फंक्शन f of x, g of x, and there is a function h of x in between them. Now at some point they are becoming equal. If f of x, g of x less than or equal to h of x less than or equal to f of x, we have h of x in between g of x and f of x, and limit over g of x is equal to limit over f of x at some point x tending to a is equal to some capital L, then limit over h of x where x tending to a should also be equal to L. That is our sandwich theorem. Student confuse mat hoiyega. It's a very easy concept. H f और g के बीच में था. एट सम पॉइंट ए f और g इक्वल हो गया, तो सिंपल सी बात है h भी उसके इक्वल होगा. डायग्राम को देखो. a पर x इक्वल टू a पे व्हाट इज हैपनिंग? f एंड g they are becoming same, and because of h in between them, मरता क्या ना करता h को भी f और g के बराबर होना पड़ रहा. वही बात यहां बोली जा रही है. if we have a term h in between g and f, at some point a, g and f are becoming equal, then h will also be equal to them, which is clear from this diagram कि f और g अगर किसी पॉइंट पे इक्वल हो गए तो बिकॉज ऑफ h इन बिटवीन देम h को भी उस पॉइंट पर f और g के इक्वल होना पड़ेगा. इट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम.
I'm just taking a problem. Limit over n upon n square plus 1 plus n upon n square plus 2. In this way it is going up to n upon n square plus n, where n is moving towards infinity. Now student, in such kind of problem, it's not easy to check indeterminate form. अगर आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो द होल एक्सप्रेशन इज गोइंग फॉर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी. फाइन. नाउ कौन सा मेथड यहां पे लगाया जाए? एल हॉस्पिटल की बात आएगी तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सो इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी प्रेफर सैंडविच थ्योरम. समझिएगा हाउ. ये मेरा पूरा जो एक्सप्रेशन है एन अपॉन, चलिए इस प्रॉब्लम के लिए मैं पहले पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा एक्सप्रेशन हमें बड़ा लिखना होगा. इफ आई से दिस एक्सप्रेशन n upon n square plus 1 n upon n square plus 2 n upon n square plus 3 up to n upon n square plus n. ठीक, ये किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा इसका पता अगर हम लोग लगा लें, किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा अगर इसका पता हम लोग लगा लें, बताओ. कंटिन्यूअसली डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. कंटिन्यूअसली डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मींस व्हाट? फर्स्ट टर्म बड़ा होगा और आखिरी टर्म क्या होगा? आखिरी टर्म सबसे छोटा होगा. आखिरी टर्म सबसे छोटा होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. इफ आई रिप्लेस ऑल द टर्म विद द फर्स्ट टर्म, तो मैंने ओवरऑल एक्सप्रेशन को बड़ा कर दिया कि छोटा कर दिया? फिर से सुनना. डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो फर्स्ट डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होता है? ओवरऑल वैल्यू डाउन होती है. तो लास्ट टर्म इज द स्मॉलेस्ट वन एंड फर्स्ट टर्म इज द बिगेस्ट वन. नाउ इफ आई रिप्लेस ऑल द टर्म विद द फर्स्ट टर्म, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया. तो माई एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी लेस देन n times n upon n square plus 1. Are you getting it? Now, if I replace all the term with the last term, मैंने सभी टर्म्स को लास्ट वाली टर्म से रिप्लेस कर दिया, तो ओवरऑल टर्म की वैल्यू मैंने कम कर दी. सॉरी मैंने क्या बोला? इफ आई रिप्लेस ऑल द टर्म विद लास्ट टर्म, अगर मैं लास्ट टर्म सभी टर्म्स को लास्ट वाली टर्म से रिप्लेस कर दूं तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैंने छोटा कर दिया. सो n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस n. बोलो, ये आया समझा? एक्सप्रेशन फॉर विच वी हैव टू फाइंड द लिमिट विल ऑलवेज बी लेस देन n टाइम फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन n टाइम्स लास्ट टर्म. टोटल टर्म्स हमारे n है. अगर मैं सबको फर्स्ट टर्म से रिप्लेस कर दूं तो यानी मैंने एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ा दी, तो मेरा एक्सप्रेशन इससे छोटा होगा. सभी टर्म्स को अगर मैं लास्ट से रिप्लेस कर दूं तो मैंने इसकी वैल्यू कम कर दी, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन. बोलो. नाउ आई एम टेकिंग लिमिट ओवर n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, लिमिट ओवर given expression less than limit over n square upon n square plus 1. Now I hope these limits we can solve easily. For example मैं इसकी बात करूं, ये लिमिट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेथड नंबर 3.
ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना, इसको लिखेंगे लिमिट ओवर 1/1 प्लस 1/n² and tending to infinite. Now putting n infinity, it is n को infinity रखोगे तो 1/n² 0, तो finally we will get 1 from here. इधर आइए. Now this limit, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो इट इज लिमिट ओवर 1/1 प्लस 1/n. Putting n infinity, 1/n 0, that is also 1. Now as per Sandwich theorem, expression for which we have to find limit, that is lying between two term. Let's say this is g of x, this is f of x, and limits are coming same. As per Sandwich theorem, if we have limit of right hand, limit of left hand equal, so expression for which we have to find limit, it will also be equal to them. So in this way our answer is 1. In this way our answer is 1. लेफ्ट वाले राइट वाले एक्सप्रेशन की भी लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट वाले की 1 आ रही है, तो जो बीच में हमारा एक्सप्रेशन जिसकी लिमिट हमें निकालनी है, that will also be equal to